Assalamu alaikum, dear participants. We'll be starting soon. I'm waiting for the guest speaker to come in and join with us. Thanks for your patience. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mr. Anwer Saleem Kamal Siddiqui Saab is here with us. Anwar Saab, I want you to kindly introduce yourself, and the stage is yours. Okay. Assalamu alaikum warahmatullah. Everybody, I hope I'm loud and clear. Everybody can listen to me. Can you just send a thumbs up so I can feel comfortable while talking? Other people, if you're comfortable, please send a thumbs up. All right. So, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. My name is Muhammad Saleem Hashmi Azad. This is my social name. And um, my abroad for more than 21 years. By my qualifications, I have spent all my life working with information technology. In the beginning, I was part of faculties teaching at NAST, University of Karachi. I am basically from Pakistan Navy, where I started my career. In fact, I started my career from Pakistan Air Force at the at the intermediate college where I was teaching physics. I've got a master's degree in solid state physics, which is usually considered as the downstream of electronics. So like in petroleum, you have upstream and downstream. So downstream is like finding out the minerals and the oil and other things. In electronics, there's a part where you learn how the chips are made and how the material works. So I was in the downstream. So I worked with the Pakistan Navy at the Naval College of Engineering. That was a major breakthrough in life. Being, in electronics, I got the opportunity to work with the engineers. And when I left PNS Johor, which is now called NUST, I was teaching my MSc students, and then I spent around 18 years abroad working with Microsoft Turkey, Microsoft Kuwait. I worked with United Arab Shipping Company, but all that time I was working with information technology. I'm a CISSP, I'm a Certified Information Systems Auditor. As well, I am a CISA, I'm an ISO 27000 lead auditor. And I worked in very prominent positions in Kuwait Finance House, United Arab Shipping Company. So for me, information technology, data, information, knowledge, and ultimately the wisdom have been the very essence of my life. So my forte is ITIL, which is Information Technology Infrastructure Library. And now I came back to Pakistan after 18 years, and since then I've been teaching at NUST, Karachi University, PF Keat, and Pakistan Institute of Management. On the other hand, I'm a student of National Defense University, studying peace and conflict, and I'm also a student of Cambridge, where I earned £1,000 scholarship to learn about Jews, Christian, Muslim relationship, again, peace and conflict.
I'm also a student of CIPS, a Center of International Studies and of Peace and Security at NUST, where I have studied at the United Nations Center of Peace and Security. Now, why I'm telling you, I'm also a student of IBA. I'm also a Nana and a Dada also. Why I'm telling you all this? Because this very topic, which we are going to discuss today, the open source intelligence, OSINT, which we pronounce as, and I call it the area where I'm working, I call it the applied OSINT. And why I am now today talking to you about this, I will try to give you a bird's eye view of OSINT, and then I was thinking of charging for the course in the future, but I don't feel comfortable doing it right away because I am in a process of creating a task force. And I don't know how many of you are there right now, but I'm inviting you, all of you, to be a part of this task force, which I will introduce to you. So let's begin with the definition of what is open source intelligence. But before I move forward, I would like, if you have any question to start, begin with, if you have about myself, but not about the course because it's not a course, it's an awareness session or a talk. Although I'll talk about open source intelligence and it's how we are going to work with it. But if you have any questions, please go ahead and ask the question. Any question, gentlemen? Ladies and gentlemen? Can you hear me, gentlemen? Yeah, I can hear you, Mr. Anwar Saleem Saab. So no question forward? Yeah, I think you can move All on. right. All right. So before अगर बुरा ना माने तो मैं समझूंगा क्योंकि अंग्रेजी तो इंट्रोडक्शन इसलिए is there is anybody here who only speaks English? Hello? No, I don't think so. Is there anybody here All the who is English participants, speaking? I think all the participants are comfortable in understanding Urdu. आप उर्दू में बात कर सकते हैं. All right, good. So Anwar Saab, shall I pull out your presentation right now? Saleem, please mute your mic. Thank you much. ठीक है. नहीं सर, थोड़ी सी देर we will talk about 10 about uh, open source intelligence and हम बात चूज वो Anwar Saab, your voice is kind of rusty. आपकी आवाज जो है थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट हो रही है. जिसके बारे में चीजें समझ अच्छा अब मैंने इसीलिए पंखा बंद कर दिया और मुझे मच्छर काट रहे हैं लेकिन उसके बावजूद मैंने आप लोगों के लिए ये कुर्बानी दे रहा हूँ, खून बहा रहा हूँ कि मेरी आवाज आपको पहुंच जाए. थैंक यू सो मच. ये खून मेरा चूस रहे हैं मच्छर, लेकिन मैं जो हूँ वो आप लोगों की दे रहा हूँ. हाँ ये लोग ब्लड एंड स्वेट I'm also giving blood for you, gentlemen. So I hope, inshallah. Thank you very much for sending such beautiful emojis. अच्छा जी, तो let's start. सबसे पहले हम open source intelligence क्या है? Open source intelligence is the collection and analysis of publicly available information to clarify facts and support informed decision making. Now, why we need OSINT? This is the time of information warfare. We are, as a Pakistani nation, or specifically and generally as Muslims,
हम एक बहुत बड़े थ्रेट का शिकार हैं और वो डिसइंफॉर्मेशन है अबाउट अस, वी बीइंग हु वी आर। और स्पेशली जब हमने बहुत सारे मैदानों में बहुत से लोगों के दांत खट्टे कर दिए और उनको इस बात का अंदाजा हो गया कि ये बहुत छोटा सा मुल्क वो नहीं है जो हम इसको समझ रहे थे। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो अल्लाह ताला ने की डिवाइन मदद की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक बहुत बड़ी मुसीबत को झेला और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी उस पर हम लड़ रहे हैं। जैसे कि मैं पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट का स्टूडेंट हूँ, तो मेरी कोशिश ये है कि मैं अपने इस मुल्क के लिए एक ऐसा डिफेंस बन जाऊं जो कि इस डिसइंफॉर्मेशन के खिलाफ हो और इस डिसइंफॉर्मेशन को फाइट करे, और स्पेशली जो एक इस वक्त का सबसे बड़ा फितना जिसको आप कह सकते हैं वो फेक इंफॉर्मेशन है, वो फेक न्यूज है। तो मैं बेसिकली 62 साल का नौजवान हूँ, हु इज ओनली 16 years old इन पाकिस्तान। तो आप कहेंगे 62 साल और नौजवान। तो मेरे एक दोस्त हैं जो अपना नाम 4 A से अनवर लिखते हैं, मेरा नाम भी अनवर हाशमी है। तो वो मेरे प्यारे दोस्त मुझे ये कहते हैं कि आप 18 साल बाद वापस आए तो पाकिस्तान आपके लिए गहवारा है, आप दोबारा पैदा हुए। तो मैं इस से कि मैंने बहुत कुछ सीखा। तो एक चीज जिसकी मुझे जरूरत महसूस होती है एज ए पाकिस्तानी वो ये कि इस वक्त में हमें इस डिसइंफॉर्मेशन, इस अ, इस पर्टिकुलर ये जो हमारा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, इसमें जो है वो हमने वी हैव टू फाइट। आप देख सकते हैं कि हमारी फौज के मुतालिक लोगों ने मुख्तलिफ महाज खोले, सब कुछ हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमें अल्लाह ताला जो है मुसलमानों को इन जनरल एंड पाकिस्तानियों को स्पेसिफिकली हमें एक रिकग्निशन पूरी दुनिया में मिल रही है। तो मेरी कोशिश ये है कि हम ओपन सोर्स इंटेलिजेंस को यूज करें और एक ऐसा ऐसा ऐसी वर्क फोर्स क्रिएट करें, एक ऐसी टास्क फोर्स क्रिएट करें, वर्क फोर्स नहीं, एक ऐसी टास्क फोर्स क्रिएट करें जो पाकिस्तान के डिफेंस के साथ साथ उन लोगों के साथ जो लोग बुनियादी तौर पर बेसलेस वॉर मॉन्गरिंग और कहते हैं कि हिपोक्रेटिकल बिहेवियर का शिकार है, उन्हें एक्सपोज किया जाए। इसमें मेरे जो टारगेट है ऑडियंस है वो जर्नलिस्ट हैं और उसके अलावा वो तमाम मुहब्बे वतन जो इस पर्टिकुलर एफर्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं। लेक्चर के दूसरे पार्ट में मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा उस टास्क फोर्स से, और आप सबको और इस मुल्क के डिफेंस के लिए जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, और स्पेशली हम मुसलमान जिस चीज की वजह से पहचाने जाते हैं वो हमारा सच है, और वो सच हमारे नबी ने हमें सिखाया है। लेकिन सच, जैसे कि पीटीवी कहता है कि सच हिकमत के साथ, जिम्मेदारी के साथ। तो इंशाल्लाह इन इब्तदाई कलमात से मेरे मोस्ट प्रोबेबली आपको समझ में आ गया होगा कि ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की जो डेफिनेशन है उसको हम यूज करना चाहते हैं इन द एरिया ऑफ रिजॉल्विंग पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड टॉकिंग अबाउट कि हमारा एज ए मुस्लिम जो कि कुल या अय्युहल काफिरून पर बिलीव करते हैं, जो इस बात पे बिलीव करते हैं कि हम सब को एग्जिस्ट कर सकते हैं, और हमारा कुरान भी ये सिखाता है कि हम अपनी डिफरेंसेस की नहीं, हम कॉमनैलिटीज की बात करते हैं। तो हम ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के कलेक्शन और एनालिसिस पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन से वो क्लियर फैक्ट्स जो हमारा पॉस्चर बयान कर सकते हैं एज ए मुस्लिम, उस पर काम करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं प्रोफेसर साहब आपसे गुजारिश करूंगा कि वो जो मैंने आपको स्टेप्स दिए थे उसमें स्टेप नंबर 1 में जो डेफिनेशन है वो मैं पूरी कर चुका। अब आप स्टेप नंबर 2 जो OSINTframework.com है वो आप जरा दिखाइए, तो मैं फिर इस पर बात करना शुरू करूं। अगर कुछ सवाल है अब तक तो पूछ जी सकते हैं आप। अनवर साहब, यहाँ पे एक सवाल किसी ने चैट में लिखा है। लेट मी रीड आउट दैट टू यू। कुन फयकून ने लिखा है, आर यू श्योर अबाउट प्रोटेक्टिंग ए कंट्री, सॉरी let me go over there again. Are you sure about protecting a country made out of uh, na- nationalistic thought, and we will use the task force for Akida, then politics and geopolitical warfare? आई थिंक
मैं इन सारी कॉम्प्लेक्सिटीज में जाए बगैर बहुत सिंपल सा आपको एक आंसर दे सकता हूँ कि कभी आपने वो एक छोटा सा परिंदा होता है जिसकी पीली बीक होती है, उसकी आपने अक्सर देखा होगा, वो उसको लाली कहते हैं। उसकी बीक तो पीली होती है लेकिन उसको लाली कहते हैं। मैंने उसको अपना घोंसला बचाने के लिए लड़ते हुए देखा। मैंने बहुत छोटे जानवरों को अपने डोमेन की हिफाजत के लिए लड़ते हुए देखा। इस्लाम, गैर इस्लाम, जो भी आप जहां से भी आप तशरीफ ला रहे हैं, वो कि ये मुल्क अल्लाह ताला की मशीयत से वजूद में आया। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह इसका बुनियादी फैक्टर था जिस पर हमारी तमाम हमारे असलाफ ने, हमारे बुजुर्गों ने अपनी जानें दी, खून बहाया। तो आपका सवाल ये है कि हमारा पोस्चर क्या होगा? हमारा पोस्चर वही होगा जो एक ए पॉलिटिकल एंटिटी का होता है, चाहे वो आईएसआई हो, चाहे वो पाकिस्तान आर्मी हो, नेवी हो। We are supposed to defend ourselves. And my posture is, as a Muslim, this land is my country. और अल्लाह ताला ने हमें अपनी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुल्क से मोहब्बत करने पर मना नहीं किया। आपने इस पर कदगन नहीं लगाई। आपका मुल्क यमन था, आप हमेशा ही रुकने यमनी के सामने बैठते थे। मुल्क से मोहब्बत एक दूसरी बात है, लेकिन मुल्क की इबादत, झंडे की इबादत एक दूसरी बात है। तो आई थिंक मैं शायद सवाल का जवाब आपको दे दिया है कि जैसे कोई भी फोर्स अपने पीस ऑफ लैंड की हिफाजत करती है, अपने अपने फेथ, यूनिटी, डिसिप्लिन का जो कॉन्सेप्ट है हमारा, जिसको हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, उसके डिफेंस के लिए ये कोशिश है। अगर इस पर आपको ये बात क्लियर हो गई है तो एक थम्स अप दे दीजिए, वरना काउंटर क्वेश्चन कीजिए, तो फिर हम आगे चलते हैं। ओके, कुन फयकुन, वी विल टॉक इंशाल्लाह। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रोफेसर कैन यू डू मी अ फेवर? आप जरा ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की वो जरा वेबसाइट दिखा दीजिए। जी मुझे 1 मिनट दीजिए, आपने वो व्हाट्सएप पे भेजा है, मैं उसको ज़रा यहाँ अपने सिस्टम पे खोलता हूँ। जी सर, जी सर। तो मैं इन द मीनवाइल आई विल कीप ऑन टॉकिंग। तो बात सारी ये है कि देयर इज अ lot of lies going out, and we are the very, हम क्या कहना चाहिए कि हम अलमबरदार हैं इंशाल्लाह सच हिकमत के साथ। हमारी कोशिश है कि दुनिया को एक बात बता दें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, और ये इस्लाम हिकमत बालिगा है। आपकी जो भी फेथ हो, आपका जो भी आपका आपका फ़िरक़ा हो, हमारा बुनियादी मकसद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हुज्जत को कायम करना है कि कुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा ताअबुदून। हमारा बुनियादी मकसद। अब मैं दोबारा शुरू करा देती हूँ। जी प्लीज डॉक्टर साहब अपना माइक ऑफ कर दीजिए। किसी का माइक ऑफ ऑन है? हेलो, जी प्लीज एवरीबॉडी ऑन म्यूट। थैंक यू। Okay. Right. Any questions in the meanwhile when he is bringing out that website? This will give you a good idea that whenever you're going to look into, for example, a fake news or a propaganda, I don't know, आप लोग are you aware आजकल इंडिया हमारे खिलाफ क्या प्रोपेगेंडा कर रहा है, अपने मुतालिक क्या कर रहा है, उन एस्पेक्ट्स को फाइट करना हमारे लिए बदरजा है, तब हमारी जिम्मेदारी एज ए मुस्लिम ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम पूरी कुव्वत के साथ इंटरनली और एक्सटर्नली उस दुश्मन को, जिसको झूठ कहते हैं, जिसको शैतानियत कहते हैं, उसको एक्सपोज कर दें, और इंशाल्लाह हम अल्लाह के हुक्म से ये करेंगे। तो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का अपना एक फ्रेमवर्क है, जिसमें आप किसी भी एस्पेक्ट को जब रिसर्च करेंगे तो उसकी एक पूरी ऑन्टोलॉजी है, उसका पूरा एक फ्रेमवर्क है। उसकी वेबसाइट आपको भेज दी जाएगी। अब्दुर्रहमान हैज लेफ्ट एंड आई थिंक इज गोइंग टू कम बैक अगेन इन अ मिनट। जी मैं आपकी वेबसाइट खोल रहा हूँ। अब्दुर्रहमान देयर? हेलो? जी, जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, जी, बिल्कुल।
जी, मैंने आप आपकी मुझे वेबसाइट प्लीज खोल ली है। अगर जी, मैं कह रहा हूँ मैंने आपकी स्विच वेबसाइट जो कर आपने बताया था वो मैंने खोल दी है। दें तो बड़ा आई आसान शेयर होगा। इट ऑन द स्क्रीन शेयरिंग। जी। ओपन सोर्स इंटेलिजेंट फ्रेमवर्क की जो आपने मुझे लिंक दिया था वो अच्छा, मैंने इसमें कर दिया। ओनली इमोशनल इंटेलिजेंस तो जरूर है, लेकिन इमोशनल नहीं है। इट्स ऑल अबाउट बीइंग रैशनल एंड ऑफ द फैक्ट्स। जी, इज इट लोडेड? जी, इज द वेबसाइट? जी, इट्स लोडेड एंड Okay. इट्स बीइंग presented on the screen. All right. Now, help me to magnify it and show it to the entire class that open source intelligence is all about finding the information and then making the sense of it. And वो मैं भी थोड़ी देर में उसकी बात करूंगा. What are those steps? It was a visible. Somebody asked the question. Faisal. Somebody called Faisal. I saw. He asked a question. जी, लियाना फैसल Can आवाज I? कट रही है। इज देयर? ओके, आपकी आवाज का कंप्लेन कर रही हैं ये। अच्छा, मैं थोड़ा सा अपनी जगह चेंज कर लेता हूँ, अब बेहतर होगी। जी, बेहतर है। ठीक है। अच्छा मोहतरम, अब आप इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर दीजिए और जरा थोड़ा सा इफ यू कैन वॉक थ्रू अस. This is an ontology of open source, the framework rather, of this very open source intelligence. How to gather facts about a person or an incident or a website. Now, there can be different ways of looking at it. Many people can use it in the negative way. We want to use it against the information warfare about our nation, about our religion, about our ummah, about our existence. So, if you can maximize that, you can see. Just click on one of the things so I can go forward. जी, If you click on, आई क्लिक्ड ऑन द yes. यूजर नेम। Yes. So, for example, on username, try to just quickly show everybody. So we will share that with everybody, and they will be able to see it. Just click anyone. So you can see that the open source intelligence is a very well defined framework which helps you to find out how to collect information and then make the sense out of it. Okay. So what sense we want to make out of it? That's what my task force or our task force is going to do. That is propaganda and disinformation about us. We being, and now as you can see, this entire thing is a well defined, and it's a GitHub thing available. Most probably we have our programmers. We'll make sure that we'll make use of it. There are many tools and stuff. We will talk about it. But today, think of it as most probably is a call for resources. This is a call for resources where we will give you free training. I was thinking of charging, but now I feel that will not be fair. So we will give you free training. I represent SEM, and they are giving. Now there is a Black Friday going on, and I'm an affiliate of a company called TCM, which is a security company in United States of America. Anyway, so framework आपको थोड़ा सा शायद नजर आ रहा है, and everybody can see that. They just want to give you a feel that open source intelligence is a very well defined domain. Earlier, it was only used by the intelligence agencies like CIA, FBI, and NATO. But now, this is an open source thing. And this is basically can be used for different purposes. I'm going to show you some practical examples in 2 minutes. So, everybody, can you just send a thumbs up if this makes sense? And as you can see on your screens, I hope all of you are not using. All right, so I can see a lot of thumbs up. All right, great. We will get a lot of time, inshallah, to dig into these things because see, this is our blood. Not only the mosquitoes are going to suck our blood, we are ready to give our lives for this country, but we need to make sense out of what the hell is going on.
I've got millions of examples. I can show them, and जी अनवर you're going to साहब, show. अनवर साहब, Yeah, moderator. Thank you. let Okay, me let's. interrupt you for a Okay, minute. can you? डियर Yeah, पार्टिसिपेंट्स, please. आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे एक लिंक शेयर किया है अटेंडेंस का। काइंडली आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर लीजिए, ताकि हम लोगों को पता चल सके कि कौन-कौन कनेक्ट होना चाह रहा है आगे फ्यूचर के लिए। तो ये अटेंडेंस का लिंक मैंने यहाँ पे इवेंट अटेंडेंस के नाम से शेयर कर दिया है। आप लोग काइंडली इसको मार्क कर लें, एंड फर्दर ऑन फिर हम जब मूव ऑन करेंगे तो जो लोग इस सेशन के अंदर कनेक्टेड हैं, उनकी जो वर्कशॉप्स वगैरह हैं वो कंडक्ट करवाई जाएंगी बेस्ड ऑन दिस अटेंडेंस ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। जी 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 थैंक जी यू सो मच। इंशाल्लाह. Abdurrahman, a remarkable gentleman. He always conducts and moderates things at the best of his capacity. Thank you very much. So I think I've made my point. Now let's go to the next point, ladies and gentlemen. The reason I have brought you here, and that is the task force which we intend to create. मैं अब मुझे इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि आई कैन गेट इंट्रोड्यूस विद एवरीबडी, लेकिन अगर आप अपना प्रोफाइल इस आने वाली ट्रेनिंग के लिए भेज दें अब्दुलरमान साहब को, तो अटेंडेंस के बाद, तो दैट विल बी ऑफ अ ग्रेट फेवर. So we have almost 30 minutes gone, 4 minutes remaining for 21:30. If anybody has a question, please ask. And so, what open source intelligence is? Anybody can define it for me? Turn on your mic and let me know, sir. What is open source intelligence? Anybody? Himmat kijiye. Let me repeat the definition for you. Open source intelligence is the collection and analysis of publicly available information to clarify facts and support informed decision making. So what we are going to do, we are going to create that very island of truth, inshallah. And we are going to bring those things, especially मैंने इसकी जरूरत अब इसलिए महसूस की कि इंशाल्लाह जब आप हमारे से करें, तो मेरे पास इतनी एग्जांपल्स हैं जो हमारे नेबर्स जो रेकलेस baseless बातें कर रहे हैं. We need to answer them, and many of the people within our own country are doing that. So inshallah. So if anybody wants to redefine it, please do that for me. Otherwise, uh, we will go forward with our theme. Our theme is the task force using open source and open source intelligence. So it's all about collecting information and how to collect information. I showed you the framework. And when you will go with anything, you have got well defined fields available which you need to, but it's again, it's all about creating that very instinct of being in the jungle. Not everybody can be in the jungle. So you need to learn that very aspect of it. I don't want to give you promises, but inshallah, we'll make something of a value in the years to come. So nobody is there. So khair, inshallah. Can you start the presentation, Abdurrahman ji? Okay, let me pull up your presentation. Just give me 5 seconds. In the meanwhile, किसी का कुछ सवाल हो तो प्लीज पूछ लीजिए. कुन फयाकून साहब कुन फयाकून आप बोले जरा, आप बोले आपको क्या समझ आई मेरे सवाल के बाद जवाब से? अब कुन रह गए. कुन फयाकून साहब बोलिए. ओके, आप अगर इसको मैक्सिमाइज कर दें, जरा क्लियरली नजर आने लगे, तो मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी. ठीक हो गया जी. So, ladies and gentlemen, we are talking about truth above turmoil, evidence above emotion. The only thing which we intend to do is to introduce the applied open source intelligence and form this very task force. We call it A-OTF, the open source intelligence task force, which should be current, which should be realistic. And we should be able to
counter the harmful misinformation and information warfare. So you are the very soldiers of fighting this. I i i don't want to say that I regret that. I should have done it much more earlier, but everything has own time, and we will not always do as we believe. So can you go to the next slide, Abdurrahman? Can you go to the next slide, please? Okay. Hello. Okay. Thank you, sir. Can you see the next slide? No, I can't see that. Yes, now it's here. Okay. So I'm going to go in the background and I will turn on my, because somehow I can only see few words here. So I will go and I will just use my slide so everyone can see that. Okay. So why now? Why now the information hazard has become so lethal? And the biggest problem is as we have been trying to put together this very concept of, information warfare and fighting against it is because of the reason of the fake news. And now you can see that artificial intelligence on one side is trying to catalyze the development of the human intellect, but on the other side, there are certain things which are really bothering me at least, and I think it will be bothering you also. That how to filter, uh, you know, uh, these unwanted, because the danger of World War III as it is growing. I believe that we were absent at the time when the World War One happened. So the Muslims were not there. So I hope we will be able to make sure that we can do our job. So the modern information ecosystem enables rapid spread of false narratives and targeted propaganda and coordinated digital disruption. Pakistan Pakistan and the similar contexts are especially vulnerable due to the polarization, low digital literacy in the parts of population, and the active adversarial campaigns. And you will be shocked to know when I'm going to share with you how much of that is happening at this point in time. So we need to have a very active news channel talking about just like your physical vulnerabilities in the cybersecurity, where every day there is a 0 day attack and you're fighting it. Those who are IT professionals, they know what I'm talking about. So velocity of the false claims reach millions within hours. Scale is automated, network amplify content. Impact erodes trust and threatens stability. I am a student of peace and conflict. We are the students of peace and conflict. I don't want to say I am the student of peace and conflict. We, the Muslims, are for one thing, and that is Islam, and that is about coexistence, that is about peace. I don't want to sound like a. So, can we go to the next slide, sir? Okay. Sure. Any questions at this point in time as we slide through? All right, so just stay here for a while. This is my light. This is our task force. This is our light. क्या कहते हैं उसको? Lighthouse, not the Landa Bazaar. I'm talking about the lighthouse. So this is the lighthouse we intend to work with. So go to the next slide, sir. This is the task force, ladies and gentlemen. This is the task force we need to form and formulate and gather together to. So, core strategy pillars of this is the OSINT monitoring, continuous collection across the social platform, messaging apps, forums, and media, and detect emerging threats. Rapid verification. We are working on a product called Cross Tech, making sure that we, as in the civilian data, can give information to those people who there was just one bad turn and misinformed information, and the man was killed in before the World War happened.
and then everything went out of control. So we need to, inshallah. And Allah is with us. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. He's going to make it easy for us. Ethics and accountability. We as Muslims, this is our responsibility that neutral, transparent methods, strict privacy, protectionary task force should be able to do. Next slide, sir. Okay, Any sir. question? Anybody have any question? Slide, Abdurrahman. G. Okay, this is the next slide. Can you see the slide? Can you hear me? I can hear you. Can you hear me? Hello. Yes. I'm sorry, वो मेरा जी हाथ जी, लग आपकी गया था. आवाज आ रही है. um, Yes, sir. Yes, sir. So if you can see here, the collection to advisory and having this very, defense which we work with. Can you go to the next slide, sir? All right. This is what is ideally we intend to do. We intend to create something of this, but because मैं इससे पहले बात करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप सब जरा अपने कान खड़े कर लें और मैं ये जो कहने जा रहा हूं उसको गौर से सुने. सबके कान खड़े हो गए? ओके, राइट. सुनिए. You cannot manage, you cannot control, you cannot manage if you cannot control. You cannot control if you cannot measure. You cannot measure if you cannot define. So we need to work on definitions. We need to work on managing and controlling this haphazard way and making sure that the right people in the entire world, my recipients basically are all those agencies who basically would like to get the right information at the right time. And inshallah, we are going to create this kind of a measure where we can quantify things and work with our current system and work with those who are working to protect this world. So do I sound like a Terminator 2? No, I'm not. So can you go to the next? Can you go to the next slide, please? Out. Corrective communication, capacity building, and outcomes to measure. That's what we intend to do. This presentation is available for everybody. All of you can have it. There's no copyright to it because we are open source guys. So this is what it's going to look like, inshallah, one day. We are going to get together in a virtual world, in a physical way, and going to make it happen. Can you go to the next slide, sir? Okay, sure. So this is what about it's about evidence, truth. See, basically, I'm an auditor. We all are auditors. We are supposed to make sure that we let the world know. I'm again. I'm just dying to play that thing for you. I hope before leaving we will do that. And there is one sound. I don't know whether you can play the sound here or not. I'll give it to the gentleman. So we have got around 20 minutes. I want to finish it off, especially in 1 hour. But if you some of you can stay, then so can you go to the next slide, sir? Sir, can you go to the next slide, please? Abdurrahman, is there the last slide or the end of the discussion? G, can you hear me? Yes, this is not Gamma Pelwan. This is a presentation making software called Gamma. It's an AI based thing. So I want to show you a cartoon. I which let me send that cartoon to
most probably when you will join the group. All those who are here, we are going to create a group. If you have marked your attendance, we'll put you in that group, and inshallah, we'll try to. So, can you go to the next slide? This is the end of the slide. This is the end of the slide. All right. So, truth, evidence. So, now, are we going to make money out of it? Oh, yes, you can. There are a lot of people, those who are making millions out of this profession. So if anyone of you want to make use of it tomorrow, it's pretty much like, you were in the Pakistan Army, you learn how to defuse bombs, and then somebody hired you in another army to do the job. So why not you can do the job? So where's the practical stuff? So can you go to that website, brother, iintelligence.europe? Okay, let me pull up that one. Okay, these people in Europe have done a great work, and they are basically looking at, although they are charging you, and inshallah, I hope inshallah, will be able to create something of that value. And they have issued in 2020 a handbook for open source intelligence. ये वाली वेबसाइट की बात कर रहे हैं आप? नहीं सर, नहीं सर, वो आई इंटेलिजेंस वाली आई इंटेलिजेंस, ओके, लेट मी चेक दैट अगेन। आपका मैसेज चेक करूं, आई उसका इंटेलिजेंस। स्टेप नंबर सर्टिफिकेशंस 3 का आपने मैंने आपको एक लिंक सर्टिफिकेशंस का भेजा था आपने and जी 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 वो स्टेप 3 था, वो शायद हमने मिस कर दिया, वो हम आखिरी में दिखा देंगे। आप अभी उस पर चले जाएं, जो कौन सा था, आई थिंक, माय अपॉलॉजीज, मैं आपको वो दोबारा उसको भेज देता हूँ। मैंने शायद भेजा है, लेकिन वो नजर नहीं आ रहा मुझे, तो मैं आपको फिर भेज आप देता पहली हूँ। लिंक अगर इसमें चैट में भेज देना। iintelligence.eu, this one. Anybody have heard of the Iranian flaws? Anybody in the class have heard about Iranian flaws? Anybody? इरेनियंस क्या करते हैं कि जब वो, आपने सुना होगा कि इरेनियंस के जो कारपेट्स हैं, आपको मिल गया अब्दुल मुझे रहमान? मिल गया, मुझे मिल गया, मैं जरा ट्रांसफर कर रहा हूँ हाँ, इसको ना। हाँ। तो मैं ये बच्चों को कहानी सुना देता हूँ कि वो कहते हैं कि जी वो उसमें ना, अच्छा मैंने इसको कंफर्म किया, इट्स नॉट अ मिथ, इट्स रियलिटी। तो उनके कालीन जो है वो दुनिया भर में मशहूर है। तो इरेनियंस क्या करते हैं कि दे पुट अ फ्लॉ इन दैट वेरी कार्पेट। उसकी वजह यह है, वो कहते हैं कि सिर्फ अल्लाह जो है वो फ्लॉलेस है, इंसान में गलती हो, साथ से गलती हो सकती है। तो इट्स गुड कि हमारा एक इरेनियन फ्लॉ अभी क्रिएट हुआ है यहाँ पे, तो इट्स परफेक्ट। सो वी आर ऑल सपोज टू गो अलोंग फॉर विद दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस। हजरत जो हदीस है, आपने फरमाया कि वो लोग हैं कि अगर हक की बात सुराया में भी होगी तो वो वहां पहुंच जाएंगे। तो आई इंटेलिजेंस जो है, ये यूरोप की एक कंपनी है, इट्स अ फॉर प्रॉफिट कंपनी। दे यूज ओपन सोर्स इंटेलिजेंस फॉर they have their own clients, and okay, this is it. So acquire, analyze, and act. So this also have got a handbook. That handbook is for you for the year 2020, but now they don't produce any PDFs. Can you maximize it, sir, for us a little bit? ओके, Okay. So ideally speaking, we intend to make this task force, once established, we will be able to create something of this. And anybody who will learn the demolition most probably can go and work somewhere. We intend to connect with some with मैंने आज सुबह अब्दुल रहमान और हम चाय पी रहे थे कोटा होटल में बैठे हुए, तो अब्दुल रहमान ने कहा, what exactly you have in mind? And I said, you are the one who's going to do it. I'm only thinking about it, how to make it happen, because we are working on blockchain, we are working on different aspects, and I believe, inshallah, we are going to make it happen. I hope I don't sound like utopian, but so can you just help us to browse through this, ओके, श्योर श्योर। please? लेट मी क्लिक ऑन द अबाउट क्या कहते हैं, हु आर वी, व्हाट डू वी डू, ट्रेनिंग। How we learn. Okay, they provide training, so we intend to do the same. We need to, maybe we'll copy them. There's nothing wrong with that. But the idea is that they are running a for-profit company. But what we intend to do it, we want to make it a flag carrier of Pakistan. Anybody knows who Internet Engineering Task Force understand the concept of the task force.
So we intend to create one of the first task force for fighting this disinformation. Now, do me a favor. I sent you that handbook. Can you help us to browse through the handbook quickly, and then I will call it off. I hope I haven't left मैं anything. अभी खोल लूँ Yes, the security PDF, handbook. and then my affiliates, TCM Security, they are having the Black Friday going on, sale going on. You can get 50% discount on different open source trainings and all that. But I would request you not to be in a hurry. Just take your time. Inshallah, we are going to make it happen for you. Those who wants to join the force, they are very much welcome. So, ladies and gentlemen, this is a 2020 effort. I did it with the BIPP a few days ago when I was in Lahore, one of the think tanks of Pakistan, and this is available for everybody. Abdul Rahman is going to send all of you the presentation and the framework and everything. Ponder upon it, think about it. So I'm going to now wrap it up. I hope I was not too emotionally moved. I tried myself to be very rational, and as you can see, that it's a complete set of information. And thanks to the internet, you have got most of the information available there. But how to make sense out of it, how to work together, I will conclude my मैं अपनी बात पूरी करता हूँ हजरत अली के करमल्लाह वजह के कौल से। आपने फरमाया कि जो शख्स मुतलकुल अनानियत से काम लेगा, मीन मोनोपलिस्ट होगा, अपनी बात चलाएगा, वो तबाह हो जाएगा। जो दूसरों के अकूल को अपनी अकल में शामिल कर लेगा, उनके अकल से फायदा होगा। ये टास्क आप समझ लीजिए, अम, जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इंशाल्लाह जहाँ जल्द हम दुनिया पे साबित कर देंगे या हम नहीं साबित, although we are small, but most probably Allah is going to take the work from us as it happened to Abraham. So, the floor is open for the questions. If you have any questions, please go ahead. It was a talk. It was not a lecture nor a training course. It was an awareness task, and I joke about awareness. And you don't need hardware, you don't need software, you need hardware. So awareness is everything, and you're all welcome to call your friends and brothers and the sisters if they want to be a part. I'm not the one who's going to tea. So, you have any question, ladies and Couldn't hear you because voice distortion. Can you repeat the quote again? जी मोहतरम क्वेश्चन। Leana Faisal कह रही हैं couldn't सर मैं hear कह रहा हूँ, अच्छा ओके, हजरत अली करम अल्लाह वजह, हाँ जी, जी जी जी, हजरत अली करम अल्लाह वजह ने फरमाया जो शख्स मुतलकुल अनानियत से काम लेगा, मतलब मोनोपोलिस्ट होगा। इज दैट क्लियर? जी। thumbs up will do. अच्छा कुन Anybody who's a फयकुन पूछ रहे monopolist हैं, is doomed. कुन फयकुन पूछ रहे हैं इज देयर ए Okay, व्हाट्सएप ग्रुप? okay, good. तो ये आपको हम बता दें कि ग्रुप अब अभी हम बना के आपको उसमें ऐड कर देंगे जो लोग पार्टिसिपेंट हैं, ताकि यू कैन वी कैन कम्युनिकेट विद यू अबाउट द फर्दर वर्कशॉप्स। If you have any further questions, Yes, inshallah. you can either type it in the text box or आप interact कर सकते हैं directly guest speaker से। काइंडली आप लोग जो हैं वो जो भी क्वेश्चंस हैं अभी स्पीकर से काइंडली पूछ लीजिए। जी अनवर साहब, द स्टेज इज योर्स, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। नहीं नहीं, नॉट एट ऑल। इन द मीन वाइल आप इनको मेरी एफिलिएटेड जो कंपनी है उसका नाम टीसीएम है, उनकी जरा वेबसाइट दिखा दीजिए। टीसीएम इज हैविंग ब्लैक फ्राइडे
देखिए सवाल चाहे कितना ही आपको देखिए हजरत मोहम्मद हसन की हदीस है, आपने फरमाया सलाम आधी हिकमत है। और आप आज देखें चैट जीपीटी में एवरीथिंग इज अबाउट कॉग्निशन। वो बड़ा खूबसूरत से कार्टून है, वो मुझे अगर मिल गया तो इंशाल्लाह मैं ग्रुप में पोस्ट करूंगा कि वो बुक लाइफ के ऊपर एक बहुत बड़ी सी बुक लिख कर एक बंदा ले आता है, तो लोग कहते हैं कि ये किताब तो एआई ने लिखी है। तो वहाँ जजेस होते हैं, वो कहते हैं प्रॉम्प्ट किसने लिखा था। तो बात सारी ये है कि अब आप अपना ज़हन बचा सकते हैं, बहुत सारे काम आपकी एआई करेगी और आपने जो काम करना है, वो अपने इमेजिनेशन को अच्छा ग्रुप का लिंक हाँ, मिल जाएगा जी, आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। हिना कह रही है सर कोई ग्रुप तो हम जॉइन हाँ, बिल्कुल देयर इज़ अ ग्रुप यू विल बी जॉइनिंग द ग्रुप। क्वेश्चन जी, anybody has a question? चाहे आप उफ कह दें मुझे इतना ही अच्छा लगेगा। Please turn on your mic and say something. Thank you. At least say thank you if you want to. Did you learn something? Was it the feedback time? Okay, everybody. Was it? Does it make sense to you what I'm talking about? Thumbs up will do. Okay. All right. There's so many thumbs up. Okay, Mustanir and Kashif and all right, and mashallah. Thank you very much. I am ये delighted. अनवर साहब, ये मोहम्मद अहमद हैं, इन्होंने हैंड रेज किया हुआ है। मोहम्मद अहमद, काइंडली आप बात कर सकते हैं अनवर साहब से इफ यू वांट टू स्पीक। मोहम्मद मोहम्मद अस्सलाम मोहम्मद अनवर जी, बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है सर मेरी? जी जी आप वालेकुम अस्सलाम, यूर लाउड एंड क्लियर सर। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि आपने जैसे बताया है कि लाइक अभी मॉडर्न डे इंटेलिजेंस में जो इंफॉर्मेशन का रोल है वो बहुत ज़्यादा ही अहम है। तो कोई इस तरह की एग्जांपल हो लाइक वेस्ट यूरोप से रिलेटेड जिसमें हम जो अभी अपना काम वगैरह करने लगे हैं इसकी कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल हो जो उन्होंने किया हो, लाइक हम भी उसी तरह का कुछ करेंगे। जी, जी, मैंने अभी आपको वेबसाइट intelligence.eu, ये एक यूरोप की आई इंटेलिजेंस के नाम से एक कंपनी है व्हिच इज़ फॉर प्रॉफिट कंपनी और आप इसकी वेबसाइट पर जाइए एंड इफ यू कैन ब्राउज़ थ्रू यू विल फाइंड आउट कि these people are giving you access to China, they are giving you an access to all the parts of the world to gather information and make decisions. See, it's don't think it's some kind of a espionage or sabotage or some kind of what do you call it, spying. It's not spying. It's about talking about the truth, talking about the goodness, talking about what's really going on. You can be hired with one of the biggest company like Procter and Gamble, for example, and try to find out what their competitors are doing. So that can be an example. But iintelligence.eu, I think, is the example you should look at. Anybody else? Abdurrahman, अस्सलाम वालेकुम। Abdurrahman, जी जी ये जी एक सेकेंड Abdurrahman, इसलिए हम जरा ऑन कर दें, इनका सवाल सुनते हैं। जी जी सवाल पूछिए सर। अस्सलाम वालेकुम। आपने आई इंटेलिजेंस बहुत अच्छी रिसोर्स बताई है। आई वाज वंडरिंग कि क्या चूंकि ये ओसेंट है तो क्या ये ओपन सोर्स में इसमें कुछ चीजें अवेलेबल हैं या नहीं है? जी, जी, हमने आपको पहले ही जो चीज़ बताई वो जो फ्रेमवर्क है वो गिटहब पे अवेलेबल है, आप उसकी एपीआईज़ भी हैं, उसे प्रोग्राम भी कर सकते हैं। देयर आर एप्लीकेशंस अवेलेबल। दिस इज़ ओपन सोर्स। इट्स कॉल्ड ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, ठीक है? तो हज़रत मौलाना आपने हम्म, फरमाया जब तक ग्रास होता है तब तक but the point is जी अनवर साहब, आपकी आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है, काइंडली दोबारा से बोलिए। हाँ, आपकी आवाज डिस्टॉर्ट हो रही थी। जी सलमान, 1 मिनट वेट करिएगा, आई थिंक ही इज बिजी समवेयर।
ये गिटहब पे जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस है उसका लिंक मिल सकता है क्या? जी, सारे लिंक्स और रिसोर्सेज और शुड आई गो विद OSINT टूल्स गिटहब टॉपिक्स? जी मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ चैट के ऊपर, ताकि आप लोगों को ये लिंक्स भी अभी मिल जाए। होल्ड ऑन। श्योर। यहाँ पे आप रिसोर्सेज में जी देखिएगा। काशिफ सवाल कीजिए। जी, ये काशिफ का सवाल है कि गिटहब के ऊपर जो काशिफ ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है उसका लिंक मांग रहे हैं। जी अनवर साहब, कैन यू हियर मी? तो वो जो I'm not a programmer myself, but I know that these things are available. तो ये जो फ्रेमवर्क की जो वेबसाइट है वहाँ पे GitHub की सारी जो है वो डिटेल्स मौजूद हैं। ठीक है, वो हम आफ्टर द वर्कशॉप आप सबको जो स्लाइड्स देंगे उसके साथ हम अरेंज कर देंगे। सारे लिंक्स हैं, सारे जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज यहाँ पे भी हैं वैसे जब आप देखेंगे तो रिसोर्सेज का टैब क्लिक करिएगा तो यहाँ पे काफ़ी सारी रिसोर्सेज आपको नज़र आ रही हैं, कोर्सेज भी हैं इसमें। इसके अलावा जो गिटहब वाले जो सोर्स कोड के लिंक्स हैं वो भी हम आपको शेयर कर देंगे। उधर TCM की वेबसाइट दिखा देना बच्चों को प्लीज। बच्चों से मेरी मुराद है मेरी फोर्स, आर फोर्स और टास्क फोर्स। They will all be recruited inshallah. They will be it's only volunteer, but inshallah we turn out to be something of a value. TCM लिंक भेज दें, हिना को लिंक भेज दीजिए। उसका लिंक शेयर कर देंगे TCM गूगल चैट के ऊपर। यस सर, वो मैंने कर दिया था, मैं दोबारा कर देता हूँ सर, मैं दोबारा कर देता हूँ। आपने मिस कर दिया, मैं आपको भेजूँ। क्वेश्चंस आप सवाल कर लीजिए। आई होप के शुड आई पुट इट इन द चैट और आपको भेजूं? आप गूगल चैट में लिख दें तो वो मेरे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। आप यहीं पे चले चैट मैं कर वो दें। कह देता हूँ। तो मैं यहीं से पुल अप कर जी जी, मैं चैट में भेज देता हूँ। जी जी। ओके। So as you can see, I am basically I'm an affiliate of this company, and we intend to. So as you can see, this is that very company called TCMsecurity.com, and inshallah, once we will be interacting, we can make use of it. The only thing is one word of caution. It's a commitment, and if you make up your mind to work with us, inshallah, we'll be more than happy. Any questions, Jicho? Let's wrap it up. So, ओके, काइंडली पार्टिसिपेंट्स, आप लोग सारे के सारे जो मैंने पिन किया हुआ है अटेंडेंस का लिंक, उसके ऊपर अपनी अटेंडेंस मार्क कर लीजिए, ताकि हम आपको जो वर्कशॉप्स का लिंक है, ग्रुप है, उसके अंदर हम आपको सबको कनेक्ट कर सकें और आपको फर्दर वर्कशॉप्स के लिए हम अप्रोच करेंगे। तो काइंडली मार्क योर अटेंडेंस अगेन इफ समबडी हैज फॉरगॉटन। तो ये इवेंट अटेंडेंस का लिंक है, आप काइंडली इसको जाके मार्क कर लें। इसको मैंने पिन किया हुआ है चैट के अंदर। Abdurrahman, how many people attended? Do you have any idea? I think 18 to 20 18 participants are over here right I now. think it's a yeah, I think it's a good number. Thank you very much, ladies and gentlemen. In conclusion, work on this concept which can meet then this time we need it. Most probably it could have started earlier, but everything has its own time. Any questions? Thank you very much. वो जो लिंक था, अटेंडेंस का लिंक था, वो मिला नहीं है शायद। तो could you pick up the Gmails from this meeting? आपको मैं भेज रहा हूँ या दोबारा। मैं दोबारा, वैसे मैंने पिन किया हुआ है, लेकिन अगेन मैं तो क्या उसी अटेंडेंस से आप पिक करके व्हाट्सएप का ग्रुप बना रहे होंगे क्या? नहीं, ये अभी जो अटेंडेंस लग रही है ना, इससे हम बनाएंगे। आप
Okay. लिंक को मैं दोबारा भेज रहा हूँ, आपको मिल जाएगा अभी। वैसे मैंने Okay. पिन किया हुआ है, आई डोंट नो हाउ। ये देखिए दोबारा से आपको मिल गया लिंक। नहीं, मेरा मकसद उसका था, व्हाट्सएप ग्रुप का वो था मकसद। अच्छा हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप अब हम इसका बना लेंगे आपकी अटेंडेंस से। सही है, मैं यही बोला था, अटेंडेंस आप बना लीजिएगा, वो ज्यादा आसान हो जी जाएगा जी जी बिल्कुल अगर आपने अटेंडेंस पे नंबर्स रखे हैं। जी हाँ रखे हैं। चलो, थैंक यू जी। थैंक यू। एनी फर्दर क्वेश्चन? Thank you very much, ladies and gentlemen. Pakistan Zindabad. Thank you, Anwar Saab. Thanks for coming and joining us. It was a pleasure being with you. Jazakumullah khair. Okay, everybody. Thank you so much. Allah Hafiz. Pleasure is all mine. I don't compromise with pleasure. Thank you very much. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.